Welcome everyone. We are doing JEE Main 2025 के क्वेश्चंस केमिकल बॉन्डिंग एंड ये शिफ्ट है हमारी अप्रैल। उससे पहले ChemTide को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो। गौरव राय को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, फॉरवर्ड करो। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इन 3,3 डाइमिथाइल हेक्स 1 इन 4 आयन में sp3, sp2 और sp हाइब्रिड कार्बन बता दें, कार्बन एटम। ओके तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्स है तो 6 कार्बन डालना होंगे अपने को। सो लेट्स ड्रॉ द 6 कार्बन। ये हो गए। 3,3 पे डाइमिथाइल है, तो अगर नंबर यहाँ से शुरू किया तो 3,3 पे डाइमिथाइल है CH3। नंबर यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद है हेक्स पर 1 इन है, ठीक है, और 4 आयन है, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इसको बैलेंस करना होगा हमें। CH2 CH ये हो गया और ये हो गया CH3, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड वाले हमें पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड वाले सारे sp3 हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हैं, ये भी sp हो गया, ये sp3 हो गए। ये डबल बॉन्ड वाले sp2 होते हैं, ये भी sp2 हो गया और ये sp3 हो गया। तो बेसिकली sp3 में हमारे पास कितने चल रहे हैं? 1 2 3 और एक ये भी है sp3 वाला। तो बेसिकली हमारे 4 हो चुके हैं sp3 पर। तो 4 पर तो एक ही दिख रहा है, ये वाला, तो आंसर हमारा 1 होना चाहिए। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं बाकियों का। sp पर हमारा ये है और ये है, तो sp पे 2 हो गए हैं, ठीक है भाई। और sp2 पे देखो, sp2 पे ये रहा, ये भी 2 है, तो हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 NF3 NH3 XeF2 ClF3 SF4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल विद नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट एंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हाईएस्ट नंबर के लिए तो हमें स्ट्रक्चर बनाना होगा पहले। सल्फर के पास 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो उसने अपने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, तो ये नॉन पोलर हो गया है, दैट नॉट इक्वल टू जीरो डाइपोल मोमेंट। NF3 का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन फिक्स और 1 लोन पेयर। दिस इज आल्सो नॉट जीरो। उसके बाद है अमोनिया। अमोनिया भी सिमिलर जस्ट लाइक NF3, ट्रायंगुलर पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो। देन है तुम्हारा XeF2। XeF2 जिनॉन में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 फ्लोरीन के साथ आए और 3 लोन पेयर है। सो 3 लोन पेयर है, तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर पे 5 चल रहा है। 5 मतलब हो गया sp3d पैटर्न। तो बेसिकली ट्रायंगुलर बाय पिरामिडिकल पैटर्न है एंड हमने वेस्पर थ्योरी में सीख रखा है कि लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे पहले डालना है टू अवॉइड द रिपल्शन। तो 3 लोन पेयर होगा, ये F हो गया यहाँ पे, ये F और मिडिल में जिनॉन, इसका 0 हो जाएगा। तो Xe को आउट कर देता है ना, हमें नॉन जीरो देखना है। ClF3 को भी चेक करते हैं। ClF3 क्लोरीन हैव द 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल और 3 फ्लोरीन गए, तो बेसिकली 3 बॉन्ड पेयर हो रहे हैं और 2 लोन पेयर हो रहे हैं। लोन पेयर 2 और बॉन्ड पेयर 3। टोटल आंसर 5 आ गया। 5 आ गया मतलब sp3d पर भी ये चल रहा है, तो ये भी ट्रायंगुलर बाय पिरामिडिकल ही होगा। विद 2 लोन पेयर है, तो हम एक को यहाँ रखेंगे इक्वेटोरियल पे, दूसरे को यहाँ पे और फ्लोरीन यहाँ पर, तो ये टी शेप हो गया है। टी शेप में द डाइपोल मोमेंट इज बिकम नॉन जीरो। तो बेसिकली अभी नॉन जीरो इन सब के हो गए हैं, ClF3 भी हो गया है। नाउ वी हैव SF4. SF4 sulfur have the total 6 electron, 4 फ्लोरीन और 1 लोन पेयर, मतलब इसके बॉन्ड पेयर हो गए हैं 4, लोन पेयर हो गए हैं 1, टोटल आंसर 5। 5 मतलब sp3d पे ही चल रहा है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिडिकल पे। 1 लोन पेयर को यहाँ डालते हैं, ये सीसो हो गया। सीसो शेप में भी तुम्हारा नॉन जीरो है।
So क्वेश्चन ये था कि among these the hybridization of molecule with non-zero dipole moment had the highest number of lone pair of the electron on the central element. तो highest number of lone pair हमारे पास किस में चल रहे हैं, XeF2 में चल रहे हैं, बाकी सब में नहीं चल रहे थे, तो उसका आंसर हो गया sp3d. Next question, a molecule with the formula AX4, Y has all its elements from the P block. Element A is rarest monoatomic non-radioactive from its group and has the lowest ionization energy. मतलब cesium होने की probability higher चल रही है. Among A, X and Y, element X and Y have first and second highest electronegativity value. Okay, मतलब फ्लोरीन और ऑक्सीजन हो सकते हैं. ठीक है भाई. So the shape of the molecule is, okay, so they said P block, तो हम S block के elements की जगह cesium की जगह हम P block का कोई element ले लेते हैं Xe, जो rarest monoatomic और non-radioactive है, and this is combining with the X and Y, where X and Y have the first and second highest electronegativity. तो X first electronegativity पे तो फ्लोरीन और ये हो गया है ऑक्सीजन, तो XeF4O. So xenon have total 8 electron in outermost shell, where 4 is occupied by the fluorine, and that one bond pair is done by the oxygen and one lone pair. So we have bond pair here 5 sigma and lone pair is 1. Total answer is 6. 6 means sp3d2. So that should be octahedral pattern. And one lone pair we have, so we keep it one lone pair on axial, so this becomes a square and this becomes pyramidal shape. So your answer should be square pyramid. Next question, question 4. Which among the following molecule is A involved in sp3d hybridization and B has a different bond length and C has the lone pair of electron on the central element? So we have to identify here, that is, let's find out. So PF5, all the bond pair are 5, 0 lone pair. So hybridization has become sp3d. XeF4. XeF4 means Xe have total 8 electron in outermost shell. 4 is connected with the fluorine and 2 lone pair. So here the bond pair is 4 and lone pair is 2. So total is become 4 plus 2, 6 is become sp3d2. SF4, sulfur have total 6 electron in outermost shell. The 4 is occupied by the fluorine. So bond pair is become 4 and lone pair is 1. So this become sp3d. And XeF2, Xe have the total 8 electron, 2 with fluorine and 3 lone pair. So bond pair is become 2 and lone pair is become 3. Total is 5. 5 is become sp3d. So PF5 bond length are not same. So that can be answer, but here the lone pair is 0 and they said has a lone pair. So this can't be answer. XeF4 sp3d2, this is also can't be answer because we didn't need a sp3d. SF4, it has the lone pair. sp3d is also there and the bond length is also different because this is present like that way. So bond length are not same. That can be answered. XeF2 is a linear, bond length is same. So your answer should be 3. Given below are two statements. Statement 1 for this is ClF3. All 3 possible structures can be drawn as follows. Okay, so Cl have the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 bond pair and 2 lone pair. Here the fluorine is connected. So we have 3 bond pair plus 2 lone pair, 5. 5 means sp3d. So we can have the triangular bipyramidical. So yes, all the 3 having the triangular bipyramidical. So statement 1 is right. Statement 2. 3 is most stable as the orbital having a lone pair on axial. Okay, that is wrong because
we prefer to put the lone pair on the axial position rather than on the axial position. So this is wrong. First is right, second is wrong. So your answer should be 2. For more updates, don't follow to. For more updates, don't forget to follow ChemTide and Gaurav Roy. So choose the correct one. Okay. ICl2H2O. So let's just start with the easier one. H2O have the 2 lone pair and 2 bond pair. So 2:2 ratio is happening. B is matching with the 4. SO2 sulfur have total 6 electron in outermost shell, double bonded oxygen, 2 bond pair and 1 lone pair. So here the bond pair and lone pair ratio they are asking. So bond pair is 2 and lone pair is 1. So 2:1 ratio. Since it is not matching, so we are holding this. And then XeF4. 4 fluorine is connected. So 4 bond pair and 2 lone pair. So 4:2 means 2:1 again. So 4:2 is matching with this. So D is matching with the 1. And ICl2 iodine have the total 7 and minus is there. So this 2 chlorine. So basically 2 bond pair and 3 lone pair. 2:3 matching with the 3. So we have 3, 4 and 1, 3, 4 and 1. And C is written 2. Means they have counted the pi, so that's why they multiplied by 2 and 4:1. So we are going with the second answer. In SO2, NO2 minus and N3 minus, the hybridization of the central element. Sulfur is held by the 2 bond pair and 1 lone pair. So that is become bent shape and it's become 2 bond pair and 1 lone pair. 3 means sp2. Then we have NO2 minus. So nitrogen have total 5 electron, but I'm going to put 1 extra minus. So 2 bond pair, 1 lone pair, that is also become sp2. So both are sp2. We have this option, and this is the azide ion. Azide ion is formed like that way. N3 minus is a azide ion which is formed like that way. N plus, double bond N, minus here and minus here. 2 lone pair. So you are ending with the answer 1. Which of the following molecule is paramagnetic in nature? So if they have the even number of electron, that become the dimagnetic, except the 10 electron and 16 electron. Odd number of electron means it should be paramagnetic. So let's check the option. So oxygen is 16 electrons. 16 electron is para. Even the sulfur is also para. Nitrogen is 14. Can't be. This is 18. No. Chlorine, it's also the even number. So that is become 0. So we have A and D. Answer 4.